Alright, so we had learned about instantaneous acceleration, right? हाँ, वो क्वेश्चन कैसे करेंगे? X is equal to t square minus 5t plus 6. Right? इसका मतलब क्या? ये पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है और ये जो t है ये टाइम की वैल्यू। इसका मतलब हुआ दैट we happen to know the instantaneous x coordinate of the particle at all moments in time. You tell me the time, I'll tell you the x coordinate. Right? If I feed in negative values of time, I will get the x coordinates of the particle before my stopwatch started. If I put in t is equal to 0, I will get the x coordinate of the particle when I started my stopwatch. And if I put in the value of x as plus 10 or plus 20, then I'm asking what is the value of the x coordinate of the particle at a future point in time, right? So given this equation, we should understand what is the motion of the particle really like. So if this is the x coordinate, say this is the y coordinate, then the particle is located at x is equal to 6 at t is equal to 0. Right? If you put t is equal to 0, you'll get x equal to 6. And if you put, so I'll just write it here, t is equal to 0, x is equal to 6, t is equal to 1, x is equal to how much? Oh, we just put in the value 1 minus 5 minus 1 plus minus 4 plus 6, 2. So x equal to 2. T equal to 2, x is equal to 0. T equal to 3, x is equal to 0. T is equal to 4, x is equal to 2. T is equal to 5, x is equal to 5. Sorry. X is equal to 6. T is equal to 10. X is equal to 100 minus 50 plus 6, that is 56. Right, so I can just put in the values of t and I get the values of the x coordinate of the particle. Now, if you look at the data that I have written down, then using this data, we should be able to predict what is the type of motion, what is the kind of motion that the particle will execute. Right? So let's try this. तो ये पार्टिकल x इक्वल टू 6 से शुरू होगा और जैसे जैसे 1 सेकेंड आएगा ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, 2 सेकेंड आएगा तो पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, हाँ 2 सेकेंड आएगा तो पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन अब 2 सेकेंड पे भी x इक्वल टू 0 है और 3 सेकेंड पे भी x इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ that this means that the हाँ this can have two meanings. पहला मीनिंग ये हो सकता है कि भाई 2 सेकंड पे वो x इक्वल टू 0 पे पहुंचा और 1 सेकंड के लिए वहीं रुका रहा, राइट और फिर 1 सेकंड के आराम करने के बाद फिर चलना शुरू किया. दैट इज वन पॉसिबिलिटी. The other possibility, which seems more plausible, because remember x is a function of time, right? Therefore, as time keeps on changing, x also keeps on changing. Therefore, the more probable interpretation is that the particle did not stop at x equal to 0. It went beyond x equal to 0. Right? So the motion of the particle started from x equal to 6 and then it goes beyond x equal to 0. And then at some point beyond x equal to 0, it stops. But it does not really stop. The velocity of the particle becomes 0. And after that, the velocity of the particle will reverse. Okay? Just like you throw a pen up in the air. So where is the velocity of the pen? 0. The velocity of the pen is 0 at the topmost point, right? What does it mean that the velocity is 0? Well, it means that at that moment in time, the position of the particle will not change, right? However, there is an acceleration. In the case where you throw the pen, there is an acceleration due to gravity. In this case, there is an acceleration due to something, right? How do I know there is an acceleration? Because x is a quadratic function of time. Therefore, I know that when I differentiate it twice, I'm not going to get 0. I'm going to get a non-zero quantity. So there is some acceleration here. Acceleration है, लेकिन velocity 0 हो गया, right? So even if I don't know anything about velocity and acceleration, even if I don't know anything about velocity and acceleration, ये टेबल जो मैंने बनाया है, ये टेबल से मेरे को पता चलना चाहिए कि इसका मोशन कैसा हो रहा है. So to test what will happen at t is equal to 2.5, I want to find the value of x. Right? So what is the value of x at t is equal to 2.5 seconds? All you have to do is put 2.5 here and it comes out to be minus 0.25. Right? This means that the particle goes beyond the x-axis, beyond the x equal to 0 by 0.5. Now, how am I sure कि 2.5 पे ही मेरे को maximum x coordinate मिलने वाला है? How am I sure that 2.6 पे नहीं है, 2.4 पे नहीं है? Well, if you don't know anything about velocity and acceleration, if you have no knowledge about velocity and acceleration, then you can tell by symmetry. भाई 2 है, 3 पे 0 है, 2 पे 0 है, तो बीच में कहीं मैक्सिमा आना चाहिए. Or the other option is that you actually work it out. 2.1 पे क्या होएगा, 2.2 पे क्या होएगा, 2.3 पे क्या होएगा, 2.4 पे क्या होएगा. And in this case also you will find that 2.5 पे maxima. एक मिनट, just
हाँ, so I'm coming to that. So what I'm saying is that if you don't know anything about velocity and acceleration, right, still you can figure out the distance traveled by simply putting in the values of time and finding out the various values of x, right? This is a possibility. Okay. हाँ, आप वर्टेक्स बना सकते हो, ग्राफ का जो भी बना, मतलब you can actually find out the answer to the question without knowing anything about velocity and acceleration. However, हाँ, exactly, yeah. मैक्सिमा मिनिमा, अगर हमें कैलकुलस की नॉलेज है, तो हम मैक्सिमा मिनिमा से निकाल सकते हैं, राइट? अरे रुक ना आर्यन, रुक जाना, चैन रख, मैं आ रहा हूं अभी वहां पे, रुक जा। मेरी जो रीजनिंग है उसको समझने की कोशिश करो। मैं ये बोल रहा हूं कि फर्स्ट लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन is a very raw layer. This is what we call the brute force method. यहाँ पे हमें नॉलेज ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स की वजह से हम क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं. So the first layer of understanding this question is that even if I don't know the meaning of velocity and acceleration, I can still find out what kind of motion or what type of motion is being executed by the particle by simply making a table between x and t. Right? The second layer of extraction of information from this equation comes if you have a knowledge of calculus. You can find what is the minimum value of x, right? And you'll get the answer as minus 0.25. But the most advanced or the most efficient way of analyzing this problem is to have a basic understanding, fundamental understanding of the concepts of velocity and acceleration, right? So let me show you how to handle this question if we are talking about velocity and acceleration. We know that velocity is equal to dx by dt, and we know that acceleration is equal to dv by dt. Okay, na? So since x is equal to t square minus 2t, minus 5t plus 6, I get dx by dt as 2t minus 5, and I get acceleration, which is dv by dt, is equal to 2, right? So I have now the acceleration of the particle, and I have now the velocity of the particle. Remembering that the velocity of the particle is what decides change in position. Okay. Velocity of the particle is what decides change in position. Therefore, when is v equal to 0? This should be my question. When is x equal to 0? A is constant, so I don't need to worry about when a is 0 or not. So when is x 0? We have already figured this out. X is equal to 0 at t is equal to 2 and t is equal to 3. But v is equal to 0 at t is equal to 2.5.
right? And if acceleration is constant and v is 0, this is a very big thing to remember. If acceleration is constant and v is equal to 0, right? I'm talking about one dimensional motion और इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस भी करेंगे. If acceleration is constant and v is equal to 0, this simply implies that direction of motion is changing. And since we are in one dimension, I can go further and I can say that direction of motion is changing can only have one meaning, and that is that the direction of motion is reversing, right? So now, if I have to draw the x-axis and the y-axis and tell you the motion of the particle, that's actually now very simple. T is equal to 0. Look at the velocity vector of the particle. Look at the velocity of the particle. It is 2t minus 5. So if you put t is equal to 0, you get minus 5, right? And we'll, again, like I said, that we'll discuss this today. T is equal to 0 पे v is equal to minus 5. इसका मतलब कि v is pointing towards the negative x-axis. Therefore, the particle is moving like this. At x equal to minus 0.25 or t is equal to 2.5, the particle will reverse its direction. And at t is equal to 10, it is here, and this is x equal to 56. This is at t is equal to 10. So basically, the distance traveled by the particle is this distance plus this distance, right? And the upar wala distance is 56.25. Niche wala distance 6.25. So the total distance traveled by the particle is 62.5 meters. हाँ भाई, क्या आया समझ में? अब बता आर्यन क्या बोल रहा है? सर v equals to 0, t equals to 2.5 पे कैसे आया? वाह, v की क्या वैल्यू है रजत? हेलो, म्यूट क्यों कर ले रहा है तू? तो अनम्यूट करने में बहुत मेहनत लगती है. सर dx upon dt. क्या आया उसकी वैल्यू क्या है? और डिफरेंशिएट करने पे सर 2t minus 5. अच्छा ओके 2.5 into 2 समझ गया सर. Direction of motion is changing. हाँ सर, हम लोग के पास जो इक्वेशन था ना इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम x के लिए, उसमें अगर हम डायरेक्ट टाइम की वैल्यू डाल रहे थे तो हम लोग के पास जो आएगा वो बस x कोऑर्डिनेट एट दैट टाइम रहेगा ना. उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है ना. नहीं,
like that is not the displacement, huh? No. Okay. चले आगे बढ़े. Oh, I just got an expression for V, right? 2t minus 5. So this V is changing with time. I'm just curious. When this V becomes equal to 0. When I equate it to 0. उत्कर्ष ने असली सवाल पूछा है. So I said that with a knowledge of velocity and acceleration, you can do this, right? But there is a far more superior method, okay, which I cannot discuss right now. For those of you who are interested, मेरे को याद नहीं है कौन से लेक्चर में है, but ग्राफ्स जिस लेक्चर में है, अगर आप उस लेक्चर में जाके देखोगे तो you will find that there is a far superior method of doing this question. When we are discussing graphs, of course, and I will discuss this question again. (56 plus 6 is 62). Right? Am I right? Hello. Oh, bhai. Shik. 56.25 होएगा ना, प्लस 62 प्लस 6.25. देखो डायग्राम देखो. चल आगे बढ़ना. Okay. The way that we are going to tackle motion, now that we have discussed all the definitions, is that we are going to divide motion into separate scenarios. Okay? So the first scenario is that we are going to discuss one-dimensional motion. Then we are going to discuss two-dimensional motion. Right? Three-dimensional and two-dimensional are similar, right? So we won't separately study three-dimensional motion. But the way that we tackle two-dimensional will be extrapolated for three dimensions. Apart from this, there will be three cases in each. Acceleration is equal to 0. Acceleration is equal to constant. And acceleration is not equal to constant. Right? These are three cases that we'll discuss in one-dimensional motion and two-dimensional motion. So whenever you see a problem, first you must recognize
कि ये जो प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है ये किस फील्ड की है, किस जॉनरे की है। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, ए जीरो है, ए कांस्टेंट है, ए वेरिएबल। तीनों प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने के 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट तरीके होते हैं। यू नीड टू बी वेरी क्लियर एट द आउटसेट what type of motion you are dealing with. We will start with 1 dimensional acceleration is equal to 0. So what I'm going to do now is really a rehash of what you have done before. And is a rehash of what we have done or you have done before. So this is both a good thing and a bad thing. It is a good thing because you have seen these things before. It is a bad thing because having discussed motion up till now, which was generally in 2 dimensions, I'm going back to 1 dimension. So it may sort of throw you off guard कि अच्छा नहीं motion तो ऐसे ही होता है. But please keep in mind that motion 1 dimensional भी होता है, 2 dimensional भी होता है, 3 dimensional भी होता है. 1 dimensional motion अगर acceleration 0 है, पहले तो 1 dimension की मैं बात करता हूँ. 1 dimension का मतलब होता है that we are dealing only with 1 axis, right? And what I'm going to do is I'm going to take by default the x-axis. जहां पे मैं बोलूं 1 dimensional motion हो रहा है, वहां पे you can assume that the motion is happening along the x-axis. जहां पे मैं specifically बोलूंगा कि नहीं motion is happening along the vertical axis, then you can take the y-axis. लेकिन वो भी necessary नहीं है, आप vertical axis को x-axis भी call कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. So if I am going to take by default the x-axis, then the position vector of the particle will only be x I cap. Right? I hope everybody agrees with this. Please see what I have written. Please understand what I have written. It is my claim that if I am dealing only with 1 axis, and if it is by default the x-axis, then the position vector of any particle existing on this x-axis is simply equal to the x-coordinate of the particle, right? The distance from the origin, multiplied by I cap or minus I cap as the case may be. Everybody agrees with this? ये आ रहा है सबको समझ में? अब पोजीशन वेक्टर में j cap नहीं आने वाला, right? It is not going to be j cap and k cap, it is only I cap. Since the position vector is going to be only x I cap, okay, what I decide to do is that I decide to drop the I cap. है ना? इसका क्या मतलब हुआ भाई? अब अगर हम सब लोगों का सरनेम एक ही है, अगर हम सब लोग का सरनेम एक ही है, तो फिर सरनेम लेने से कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है ना. फॉर एग्जाम्पल द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन हैविंग द सेम सरनेम आई थिंक इज स्मिथ, right? Or if you go to China, it is Lee. If you have a class of 100 guys and every one of them has the same surname Smith, and I sort of, as a teacher, I call, bhai, answer batao Smith, answer batao Smith.
तो वो थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, राइट, एंड you will not be able to sort of distinguish. So a crude example, but something like that. तो ये स्मिथ जो सरनेम है उसको we decide to drop and we decide to only call the student by the first name. It is understood that the surname is Smith. In the same way, अभी मैं सरनेम की बात कर रहा हूं, पहले नेम की नहीं बात कर रहा. In the same way, here I have decided to drop the I cap, and therefore the position vector of the particle will simply be given by x, where x is the x coordinate of the particle, and therefore it can take both positive and negative values, and the negative value that it takes is really a remnant of minus I cap. Okay? अगर मैंने बोला एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है -5 I cap मीटर्स और एक और पार्टिकल है उसका पोजीशन है +7 I cap मीटर्स, तो बिकॉज दिस I cap is going to be common and unique, it is going to be common for all position vectors. Therefore, I decide to drop the I cap, okay, but the negative sign is retained, and this negative sign, whenever it appears, please don't think of it as a negative sign of the number line. If the position vector of the particle is -5 meters, if this is the statement, then -5 does not represent -5 arithmetic wala -5. Minus is the direction and 5 is the magnitude of the position vector. Right now, I know that we have discussed directions in terms of I cap and J cap and K cap. Here also, the direction is in terms of I cap, J cap and K cap. It is just the fact that we are working in one dimension. Therefore, we are forgetting about, or we are dropping the I cap or the J cap or the K cap for the moment, right? ये आया सबको समझ में? So one dimension motion में I will put an arrow on top and I will write this down as plus minus x. So this thing is telling me the direction, and this thing is telling me the magnitude. Right? Okay. Please never ever confuse with arithmetic wala plus and minus. Okay. Similarly, velocity is equal to plus minus 5 meters per second. This would be the direction. This would be the magnitude. ये आया समझ में सबको? Is everybody understanding this? अब 2D का भी बात मत करो, 2D का बात मत करो. अभी ये बताओ मेरे को ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ. ये समझ में आया कि नहीं, मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ. कौन सा लास्ट पॉइंट है ना? विच लास्ट पॉइंट? मैंने आखिरी में क्या बोला था ये मुझे नहीं मालूम. क्या क्या नहीं समझ में आया? बताओ भाई अनाग.
नहीं बताएगा तो ये प्लस ये हाँ बता रहा हूँ। यहाँ पे घोस्टली आई कैप जे कैप के कैप, एक भूत है यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप का। राइट, there is a so I am writing down the position vector as indeed plus minus x I cap or j cap or k cap. It is just that since all position vectors will have this I cap or j cap or k cap common, right? It is that all position vectors, all velocity vectors will have this I cap, j cap, and k cap common. I've decided to drop it. I will not write it. That does not mean it is not there. तो अगर मैंने आपको बताया कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी इज +5 मीटर्स पर सेकेंड, इसका मतलब हुआ दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू +5 आई कैप मीटर्स पर सेकेंड और जे कैप मीटर्स पर सेकेंड और के कैप मीटर्स पर सेकेंड। अभी आया समझ में? प्लस माइनस को जो है एक आई कैप जे कैप के कैप के साथ ही रीड करना है। मैं लिखूंगा नहीं, आप भी नहीं लिखोगे, लेकिन रीड अपन उसे करेंगे। सो दिस इज माय क्वेश्चन नाउ, दिस इज माय क्वेश्चन नाउ। वी हैव 2 cars A and B. We have 2 cars A and B. A moves with +5 meters per second. B moves with -5 meters per second. Which has the greater velocity? A moves with +5 meter per second. B moves with -5 meter per second. Which has the greater velocity? आंसर सेम वेलोसिटी बिल्कुल गलत है। मैग्नीट्यूड इज सेम, हाँ, बट नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं, विच हैज ग्रेटर वेलोसिटी, ए और बी? नन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। A +5 meter per second, B -50 meter per second. Now which has greater velocity? नहीं, मैं ये नहीं, magnitude of B is more, obviously it is more. I'm just asking which has greater velocity. Is it A or is it B? वाह श्रीकांत, तो तेरे सामने अगर 2 गाड़ियां होंगी, एक का वेलोसिटी +5 है, दूसरे का वेलोसिटी -50 है, कौन ज्यादा तेज चलते हुए दिखाई देगा? ए।
नहीं, सब लोग का आंसर गलत, कोई करेक्ट आंसर नहीं बता पा रहा। वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, ए की है, बी की है? हाँ, अब इसने पकड़ा। ये क्या आंसर है बे पार्थ, ए और बी? वो एक बहुत बढ़िया वो देखा था ट्रू और फॉल्स वाला, कि स्टूडेंट ने कैसे लिखा। आई डोंट थिंक आई कैन राइट दैट। टी, उसको आर तो ऐसे लिखा था कि लग रहा था ए है, और यू ऐसे लग रहा था कि, वो याद नहीं आ रहा है, ऐसे लिखा था कि ट्रू और फॉल्स जो है वो एक, ट्रू भी पढ़ लो फॉल्स भी पढ़ लो। So the answer is that you cannot compare. Yeah, there is no comparison. You can talk about the magnitude. You can talk about the magnitude. If I ask the question, magnitude of velocity, speed किसकी ज्यादा है? A और B में speed किसकी ज्यादा है? तब there is no question. There is a बिल्कुल सही B की ज्यादा है, right? And speed B की ज्यादा है, उसमें कोई ambiguity नहीं है. There is no ambiguity in the answer. लेकिन डायरेक्शन किसका ज्यादा है? हाँ तो बताना रजत, डायरेक्शन किसका ज्यादा है? You cannot compare direction. You cannot say north is greater than south. You cannot say east is greater than west. Ha. Since there is no meaning of comparison of direction, therefore there is no meaning of comparison of velocity vectors. Unless what? Unless what? Good. Yes. Yes. Unless they are in the same direction. Yes. Only and if and only and only. और मैं ज्यादा only नहीं ऐड कर सकता हूँ. You have two vectors in the same direction, then you can talk about बड़ा कौन है छोटा कौन है. लेकिन अगर दो वेक्टर्स दूसरे दूसरे डायरेक्शन में हुए और किसी ने आपसे पूछा बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो ये एक नॉनसेंसिकल क्वेश्चन है और इसका आंसर होना चाहिए that the vectors cannot be compared. Here, the moment I say that minus 50 meter per second velocity VB and VA plus 5 meter per second, and I ask which velocity is greater, the answer is that there cannot be a comparison. A comparison cannot be made. Which has the greater speed? Immediately the comparison can be made. कोई problem नहीं, right? ये आया सबको समझ में? तो ये प्लस माइनस न्यूमेरिकल नहीं है, right? Please don't think that minus 50 is less than minus 5, because minus 50 नंबर लाइन पे वहां लाई करेगा और प्लस 5 नंबर लाइन पे यहाँ लाई करेगा, और मुझे छठी क्लास से पढ़ाया जा रहा है that minus 5 is less than minus 4. Minus 5 is less than minus 4 is in the domain of numbers. We are in the domain of vectors, and two vectors having the different direction cannot be compared with each other. Unfortunately, the symbolism is the same, right? Because I will end up saying A ka velocity plus 5 hai, B ka velocity minus 50 hai. So it looks like that we are comparing two numbers, plus 5 and minus 50. But always remember that there is the ghostly I cap always lurking around, right? Whenever in doubt, whenever solving a question, remember that there is an I cap always there.
So I'm asking you to basically compare plus 5 I cap and minus 50 I cap, which you cannot. You can compare the magnitudes of the two vectors, but you cannot compare the direction of the two vectors. ठीक है? अभी आया समझ में सबको? ये क्लियर है? ये क्लियर? Okay. So now I'll start with one dimension. तो वन डायमेंशन में दो कॉन्सिक्वेंसेस हुए. पहला कॉन्सिक्वेंस हुआ कि मैंने आई कैप जे कैप ड्रॉप कर दिया, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन रिटेन किया डायरेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए, डायरेक्शन लिखने के लिए. और दूसरा ये कि मैं अब पोजीशन वेक्टर को या तो x या तो y या तो z, जो भी एक्सिस होएगा, मैं सीधा x y z ही बोलूंगा. मैं अब पोजीशन वेक्टर नहीं बोलूंगा. I will prefer to talk about the XYZ coordinates of the particle. That would be better, right? So instead of saying that the position vector of the particle is x I cap, I will simply say that the position of the particle is x, right? So these two statements that I have written, statement 1, statement 2, they are equivalent to each other. So they are equivalent to each other. 1 is equal to. This means that the velocity of the particle can simply be written as dx by dt, and the acceleration of the particle can be written as d2x by dt square, or it can be written as dv by dt. ठीक है? नहीं शिवेन, अभी मैं आ रहा हूं उस पर. डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कभी नहीं बता सकते, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना. वो वन डायमेंशन हो या टू डायमेंशन हो, वन डायमेंशन में एक हमें थोड़ा सा हिंट मिलेगा, लेकिन अभी हम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की बात नहीं कर. So this is how I'm going to express things in one dimension. I may choose for vertical axis y, right? By default मैंने x choose किया है, लेकिन y भी हो सकता है. तो इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूँ that position is y. In this case, velocity is equal to dy by dt, and in this case, acceleration is equal to d2y by dt square, okay, which is again equal to simply dv by dt. ये positive negative acceleration भी हो सकता है, just like velocity. Acceleration can also be positive and negative, right? Convention है जो convention है. ठीक है? Okay. Chalo. So let's discuss the very simple case. 3 cases for 1 dimension, 3 cases for 2 dimension. A is equal to 0. This means that dv by dt is equal to 0. This means that v is equal to constant. This means that dx by dt is equal to constant. And you remember what we did in calculus? Dx is equal to constant into dt, and I can integrate both sides. The only catch in integration is that the limits must always be there. Physics में आप बिना limits के integration नहीं कर सकते हैं. तो ये xi to xf जा रहा है left hand side वाला integration, और right hand side वाला integration 0 से t जा रहा है. When you integrate, you are going to get xf minus xi is equal to this constant into dt. Let's say that this constant is v naught, so you get v naught into t, right? And xf
is equal to xi plus v naught into t. We have already seen this, right? हमने देखा हुआ है RF is equal to RI plus VT. वही exactly same ये equation है. Basically what this is telling me is that if acceleration is equal to 0, then speed is equal to distance upon time. ठीक है? वो जो 8th क्लास वाला फॉर्मूला है, speed is equal to distance upon time, you can only use when acceleration is 0. When acceleration is 0, then and only then can you use it. So please, in the future, when I tell you that the acceleration of a particle is 2 meters per second square, find so on and something, please don't come back to me as, अरे sir, distance तो speed into time होता है, speed इतना आपने दिया, time इतना दिया, ये रहा distance. Please don't do that, right? If the acceleration is non-zero, then speed is equal to distance upon time is null and void. It cannot be used. याद आया, याद रहेगा ये सबको, याद रहेगा? मेरी गारंटी है नहीं याद रहेगा, बट मेरी ड्यूटी है बोलना. Again I am saying speed is equal to distance upon time is a formula which can only be applied if acceleration is 0. If acceleration is non-zero, constant or variable does not matter, speed is equal to distance upon time cannot be applied. Why बता रहा हूँ, why ना, रुकना, आने तो दे मेरे को case 2 पे. Why मत पूछ. Case 2. Acceleration is constant. इसमें y कहाँ से आया रे? ये दिखाई दे रहा है ना, एक्सेलरेशन 0 है तो dv by dt 0 होएगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होएगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड आया अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, राइट? So velocity is equal to displacement upon time. If acceleration is constant and let us say that its value, is a naught, right? So a naught, say, then what will happen? V is equal to 0. क्या बोल रही है भाई? रुक जाओ, मैं दिखा रहा हूँ. हाँ मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ. नहीं पार्थ, ये बिल्कुल गलत है. ये देखो. Then dv by dt is equal to a naught. रजत अभी अपना हैंड लोअर कर, बाद में रेज कर, अभी रुक जा. dv is equal to a naught dt. एक स्टेप सबको फॉलो करना है. ये स्टेप कहां से आया? ये डेफिनेशन है एक्सेलरेशन का. ये स्टेप कहां से आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, और अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूं. मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स नहीं कर सकते. राइट हैंड साइड में मैं क्या इंटीग्रेट कर रहा हूं? राइट हैंड साइड में टाइम इंटीग्रेट कर रहा हूं.
Oh, why do you integrate? Oh, that is such a nice question. Yes, yes. Good, good, good. Very nice, very nice. Great, great. Good, yeah. Good. So it turns out that हाँ मैं बता रहा हूँ It turns out that I mean very good question. This is the first time I think that anybody has asked me this. It turns out that our world is governed by differential equations. Right? You remember this was the last bit of maths we did in calculus. And a differential equation was basically when you have a differential term and you have that differential term appearing in an equation. So this equation geometrically has a meaning and it has algebraically a solution. Right? So let me tell you what is the geometrical meaning. The geometrical meaning is that the slope of the curve, is equal to the square of the x coordinate at that point. Right? I'm sorry, मेरा device थोड़ा गड़बड़ है इसलिए handwriting थोड़ी गड़बड़ हो रही है, but I think new device will come in a couple of days तो clear हो जाएगा. तो अभी आप अपने notes बनाते रहो अच्छे से. So this differential equation has a geometrical meaning, which is that we are talking about a curve such that the slope of the curve is equal to, यहाँ पे ध्यान दो उसे कभी, such that the slope of the curve is equal to the square of the x coordinate at that point on the curve, right? But what is the equation of the curve itself? What is the equation of the curve itself? Well, we can do that. We can find that by the concept of differential equations. And to solve this differential equation, we sort of cross multiply, right? And we integrate both sides. And when we integrate both sides, we are going to get, now remember, I'm in the realm of maths now, so I don't need limits. I get y is equal to x cubed by 3 plus c. So it is now my contention that you draw a graph y is equal to x cubed by 3 plus 1 and you want to find the slope of the graph. The slope of the graph will be x square. Right? हाँ, geometrical meaning area under the curve होता है, लेकिन यहाँ पे हम area under the curve नहीं निकाल रहे हैं. Okay? यहाँ पे geometrical meaning इसका थोड़ा सा अलग है. Ultimately, it is geometrical area under the curve, but here it is slightly different because जब मैं ये integration carry out कर रहा हूँ, तो ये integration area under the curve of y और x axis का नहीं बता रहा. ये this is not the area. You remember मैंने d2y by dx square कैसे explain किया था? You remember that? d2y by dx square कैसे explain किया था? मैंने एक ग्राफ बनाया जिसमें y कोऑर्डिनेट पे y था, x कोऑर्डिनेट पे x था. फिर मैंने एक और ग्राफ बनाया जिसमें x कोऑर्डिनेट पे तो x ही था, लेकिन y कोऑर्डिनेट पे स्लोप आ गया था. अब जो ये नया ग्राफ प्लॉट हुआ, इसका जो स्लोप था that was d2y by dx square, right? So it was the slope of the graph. In a similar fashion,
This is not telling you, this integration is not telling you the area under the graph y is equal to fx. It is rather telling you something else. किसी और ग्राफ का एरिया ये बता रहा है. Let's not bother ourselves with किस ग्राफ का एरिया ये बता रहा है. But think of integration as a mathematical operation which can help me solve a differential equation, right? So a differential equation can be solved by the process of integration. और यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसके बाद से दोनों साइड इंटीग्रेट किया. जब मैंने इंटीग्रेट किया तो ये दोनों d वाले टर्म्स गायब हो गए, और जब d वाले टर्म्स गायब हो गए तो मेरे को एक y और x में इक्वेशन आ गया. और ये y और x का इक्वेशन अब मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकता हूँ. जो ये वाला इक्वेशन है इसको मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं कर सकता हूँ. इस वाले इक्वेशन को मैं प्लॉट कर सकता हूँ, राइट? इस वाले इक्वेशन को मैं प्लॉट कर सकता हूँ. So differential equation is a generalized way of writing a collection of curves. For example, dy by dx equal to x square is a generalized example of all curves given by y is equal to x cubed by 3 plus c. Right? It is a different way of writing. It is a different way of expressing the same thing. dy by dx equal to x square you cannot draw, right? But it is a differential equation which you can solve, and the answer that you get, that you can draw. Okay? So this is the process of differential equations, right? Similarly, in physics, all the laws, they appear to us as differential equations. For example, dv by dt is equal to a naught. This is a differential equation. It tells me that there is a physical quantity. अरे बताया तो विश्वजीत मैं मैथ्स कर रहा था इसलिए मैंने उसको लिमिट्स नहीं डाले. फिजिक्स में जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स डालेंगे, मैथ्स में लिमिट्स डालने की जरूरत है. So this differential equation that we have in front of us, this differential equation is coming from the definition of acceleration, right? And it tells me that I can solve this differential equation, है ना? पता कैसे चलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन है? आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक डी टर्म है और एक नॉर्मल टर्म है. हाँ, यही आने वाला है शिविर. दिखाई दे रहा है ना, एक डी, दो डी वाले टर्म्स हैं और एक नॉर्मल टर्म है. तो हमें पता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में एक डी टर्म रहेगा, राइट हैंड साइड में डी. अबे सुन ना रजत, जो मैं बोल रहा हूं लिखते जाएगा. सुन मैं क्या बोल रहा हूं. Listen to what I'm saying. अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक डी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, एक डी टर्म राइट हैंड साइड में आएगा. आया कि नहीं रजत? एक डी वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड और एक डी वाला टर्म राइट हैंड साइड पे आया कि नहीं? दिस इज द हिंट, दिस इज द distinct step that tells you that you are going to integrate. You understand this? Whenever in an equation you get a d term on the left and a d term on the right, that may come from the definition of a physical quantity, like this is coming from definition of acceleration, or it may come from other activities which we will see after 4-5 months. Whenever you get a equation where on the left hand side you have a d term, on the right hand side you have a d term, that is telling you now that the next step must be integration. आया रजत समझ में ये है ना? This is very easy. It's not complicated at all. It is just that you need an equation with d terms on the LHS and d term on the RHS. That's it. अब आपको पता है, without any doubt, without any argument,
अब हमको इंटीग्रेशन तो करना ही करना है, राइट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? हम इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं? इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज laws of nature appear to us as differential equations, and when we solve differential equations we must integrate, right? Without integration you cannot solve differential equation. That is the whole point. Okay? So I integrate, but I cannot integrate without limits because we are back to the realm of physics. Now time is generally starting from zero. तो मैं यहाँ जीरो लिख दे रहा हूँ, ये नेसेसरी नहीं है. आप ये भी पूछ सकते हो कि t1 t2 के बीच में क्या चेंज इन वेलोसिटी हुआ है, राइट? बट मैं यहाँ पे जीरो रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई टाइम t पे क्या वेलोसिटी है. So the trick of integrating, the trick of putting in the limits of integration in physics is to look at is to look at the d term on the right hand side and the d term on the left hand side. ये टाइम है और ये वेलोसिटी, ठीक है? अब हमने यहां पे रखा जीरो, इसका मतलब यहां पे टाइम हो गया जीरो. यहां पे मैं कुछ लिमिट रखूंगा वेलोसिटी. ये क्या है लिमिट? ये क्या है लिमिट? दिस इज द वैल्यू ऑफ v, value of v at t is equal to 0. Okay, you have to really understand this. Upper limit मैंने t रखा, इसका क्या मतलब है? टाइम की वैल्यू t हो गई. ये एक अननोन है, कोई भी टाइम t, एनी टाइम t, अलजेब्रा है. If you don't know a number, assume it to be x. If you don't know the time, assume it to be t. तो यहां जो अपर लिमिट आने वाला है, यहां पे क्या आने वाला है? वैल्यू ऑफ v एट टाइम t. आया समझ में? तो जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं फिजिक्स में, तो जो लिमिट्स होती हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उनका 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है. अगर मैंने यहाँ पे टाइम को t1 लिखा होता है तो यहाँ पे वेलोसिटी एट टाइम t1 आता, राइट? आई होप दिस इज अंडरस्टूड. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. एनीबडी नॉट अंडरस्टैंडिंग? हाँ, अभी पीछे जा रहा हूं. पहले ये बता, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? ओके. Anybody not understanding? Please raise your hand. Please tell me, this is the time to ask. What are you not understanding? Tell me specifically and I will address it. Zero क्यों लिया? Stopwatch शुरू होएगा. Convention. You can choose anything else. You can choose any time. I am going to choose 0 because I want to talk about the motion of the particle between the moment I start my stopwatch and a particular moment in time, right? आप यहाँ पे माइनस भी ले सकते हो. हाँ, यहाँ पे VI लिखेंगे, बिल्कुल VI, V इनिशियल, V फाइनल. यहाँ पे V इनिशियल आएगा और यहाँ पे V फाइनल आएगा. बिल्कुल सही. हाँ, V इनिशियल और V फाइनल. या एब्सोल्युटली.
But there is another convention. There is another convention. और इस कन्वेंशन के बारे में आप सब लोग को मालूम है. The convention is that VI को हम हमेशा U लेके चलेंगे और VF को हमेशा V लेके चलेंगे. Right? Therefore, U को हम हमेशा इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं. T is equal to 0 पे जो वेलोसिटी है वो U हो गया. So now, if I were to integrate this, the integral would be dV is equal to, now A naught तो constant है ना, A naught बाहर आ गया integration के, and the limits are 0 to T, U to V, so I get V minus U is equal to A naught T, and we arrive at the very famous, very common formula, V is equal to U plus A. U जीरो नहीं है, U जीरो नहीं है खुशी. T जीरो पे जो स्पीड है पार्टिकल की वो वैल्यू ऑफ U है. जब मैंने स्टॉपवॉच स्टार्ट किया तो पार्टिकल की क्या वेलोसिटी थी, दैट इज U, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी. इट मे बी जीरो, डेफिनेटली मे बी जीरो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. बट आई कांट से now that it is zero. ठीक है. हाँ, अब क्या करें, अगला डेफिनेशन क्या है. हाँ, this T is the time interval. You have to be very careful. ये T जो है instantaneous value of time नहीं है, right? T is time interval. Why? Because you integrated from 0 to T, right? So this would give you T minus 0. T is not the instantaneous value. This is only when acceleration is constant. Yes, this is the actual derivation. Yes, this is only when time T, the acceleration is constant, and therefore you will find that whenever I write these equations, I will always have A is equal to A naught, because I want to keep a tab. I want to always keep in my mind that acceleration will be constant. Okay. So now what is the other formula that we know? Other definition that we know? We know that V is equal to dx by dt. Therefore, dx is equal to v dt. Right? Please notice I am solving a differential equation. I get the d terms on both sides. Therefore, I know that there is going to be an integration. The integration cannot be done without limits. Again, I am taking t is equal to 0. So x ka limit must be the value of x when t is equal to 0. I will put xi, and I'll take the upper limit of time as t. Therefore, here I'll have to write xf. Right? नहीं, थर्ड केस नहीं है, अभी ये सेकंड केस ही चल रहा है. लेकिन अब एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है that now v is not a constant, and if it is not a constant, then I cannot take it out of the integral. It has to be integrated, right? It has to be integrated. Now, x is not the displacement. X is the x coordinate of the particle. X is not the displacement. X is the position of the particle. So on the left hand side, I will get integration के बाद xf minus xi, right? अभी आते हैं ये क्या चीज है. And on the right hand side, I will get integration of v dt, right? Integration of v dt
बट व्हाट इज v? व्हाट इज v? ये तो अभी हमने निकाला है ना, v इज इक्वल टू u प्लस a नॉट t. दिस वी हैव जस्ट फाउंड आउट. सो दिस विल बी इक्वल टू u. एक्चुअली मेरे को u नॉट लिखना चाहिए. u नॉट लिखना is a good practice because u is also constant. Okay, I will do that from the next class. So u is equal to a naught, v is equal to u plus a naught t. So this is equal to integration of u dt plus integration of a naught t dt. U, remember, is constant, comes out of the integration. Right? And remember the limits. मैं लिख नहीं रहा हूँ limits, but limits यहाँ पे 0 to t है, यहाँ पे भी 0 to t है. तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये सीधा ut बन गया, प्लस a नॉट कांस्टेंट है, a नॉट बाहर आ गया. क्या बचा? अगर a नॉट बाहर आ गया तो क्या बचा हमारे पास? a नॉट बाहर आ गया तो क्या बचा हमारे पास? t dt. t dt, dt नहीं बचा है, t भी है उसके साथ है, t मल्टीप्लाइड है. और इंटीग्रेशन ऑफ t dt क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ t dt क्या होता है? याद है ना सबको? मैंने बोला था ना बहुत इजी इंटीग्रेशन ही चलेगा अपने पास. a नॉट t स्क्वायर बाई 2. अब ये xf माइनस xi क्या है? यहाँ पे एक और कन्वेंशन हो जाएगा. और ये कन्वेंशन क्या है? बेसिकली कन्वेंशन इज दैट द डिस्प्लेसमेंट is equal to xf minus xi. So the LHS is nothing but the displacement of the particle. भाई I told you ना, पोजीशन वेक्टर को तो मैं x लेके चलूंगा ना. अपन ने ये डिसाइड किया ना, ये वन डायमेंशन में position is x, position vector is x, right? Therefore xf minus xi must be the displacement vector. It is the final position vector minus the initial position. And therefore we end up with s is equal to ut plus half a naught t square. Right? Okay. ठीक है. u is constant ना, मतलब जो t is equal to 0 पे जो वेलोसिटी थी, काम खत्म हो गया ना, पास्ट में है ना ये तो. t is equal to 0 पे जो वेलोसिटी थी वो तो चेंज नहीं हो सकती ना. आप वापस जाके समय में चेंज नहीं कर सकते हो ना. हाँ, हाँ, एक मिनट करो. हाँ बोलो. सर जो टाइम इंटरवल हमने स्टार्टिंग में dt को इंटीग्रेट करने के लिए लिया था 0 to t, वही हमें लेना है क्या v dt को इंटीग्रेट करने के लिए? हाँ, मतलब मैं ले रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, बट फ्यूचर में हो सकता है कि आपको कोई और टाइम इंटरवल लेना पड़े. मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 and 2 seconds. So in that case your limits of integration will go from 1 to 2. Understood? ठीक. Great. Chalo. So I will stop here. हाँ, मैं अभी भेज रहा हूँ. पहले तो आप
तो सीए दे दो, बेस्ट ऑफ लक फॉर सीए। और होमवर्क में यू हैव टू डू लेक्चर 3 नाउ, ओके, स्टार्ट डूइंग